Hello students, the question is an ammeter and a voltmeter are connected in series to a battery. Their readings are noted as A and V respectively. If a resistor is connected in parallel with the voltmeter, then option A will increase, V will decrease. Option B, A will decrease, V will increase. Option C, both A and V will decrease. And option D, both A and V will increase. So the problem is based on the topic electronic instruments, and in particular the basic use of current electricity topics such as the use of the KVL, the KCL and so on. So to solve this particular problem, first we have to draw the circuit showing the ammeter as well as voltmeter in series with the battery. Now according to the problem, in the first case there is a voltmeter and ammeter in series and they are connected with the battery. The situation is like this. This is the first case. Now in this particular case, let the current be I. This is the value of the current. Now we know that the resistance of the ammeter is very low. For the ideal ammeter, the resistance should be 0. For the ideal case, if we are saying about the ideal case, then the resistance of the ammeter is 0. But for the practical case, it is very low. The resistance is very low because it has to draw a small amount of current, so that it has to draw the current in such a manner that the voltage drop should not be there. That's the main reason. That if the resistance is high, then there is a voltage drop and the current changes. But we do not want the current to be changed when it is connected in a circuit. So for practical circuit, it is very low. Now for the voltmeter, the resistance for the ideal is infinite because it has to calculate the exact amount of voltage. So that's why it has to be open circuit and the resistance should be infinite. But for the practical case, it is very large. It is very large, not infinite, but very large. For the ammeter, the practical ammeter, the resistance should be very low because we have to find out the accurate current with the help of it. And for the voltmeter, the resistance should be very high. So that's the case. So when a very high resistance component is in series, this particular voltmeter is in series, it is having a resistance of RV. And when in series, a very large amount of resistance is there, the current should be small. Mathematically, we can find out the current in this case as I equals to total voltage. For example, the voltage of the battery is V. So the total voltage upon the total resistance is RA plus RV. Now this RV is very large. For the ideal voltmeter, it is infinite, but for the practical, it is very large. So very large value is in the denominator. And if a very large value is in denominator, then this whole expression or the whole ratio is very small. This is very small. If it is large, if this value is very large, RV is large, then this ratio is small and so the current is small in this case. And now this current which is small is going in the ammeter as well as voltmeter because these are connected in series, and this small current is measured by the ammeter. So in the first case, the current measured is given by A. As according to the problem, the current is said to be A in the first case. So A is small in this first case. The current in the ammeter is small in the first case. And voltmeter is having the certain resistance, it's having certain current passing through it. So this particular current producing the very large amount of voltage because the voltage across the voltmeter is given by the current multiplied by the resistance of the voltmeter. So the resistance of the voltmeter, which is the very large value, it produces a voltage which is very large. So the voltage is V, and according to the problem it is given as V, and this V is very large. V is very large because it is the product of the current and the resistance. The resistance is nearly infinite, very large. So the voltage is very large. So this is the first case when there is no resistance, parallel resistance connected across the voltmeter.
Now in the second case, there is a connection of a resistor in parallel with the voltmeter having a certain value. The value is not given, but it is given that there is a connection of a resistor in parallel with the voltmeter. Now, when a very high resistance value of the voltmeter, it is connected with a certain value of resistor, the overall combination, parallel combination, is having a lesser resistance, because we know that the net resistance in this case is given by R into RV upon R plus RV. Now this particular value becomes small as compared to RV when there is a parallel combination. So in other words, we can say that the overall resistance of this particular section, it decreases. It decreases. So in this case, let this decreased value is R dash. For example, R dash or R net. We can say it as R net or R dash. Now the resistance of the ammeter is same as in the previous case, because there is no connection in series or parallel with this particular resistance. So it is same as in the previous case. The voltage of the battery is same as in the previous case. Now the current in this second case, let it be V I dash. So I dash is equal to V upon the total resistance, which is RA plus R net, RA plus R net or R dash. So now this particular value, it goes down as compared to RV. So it means that this particular value is less as compared to this particular value. RA plus R net is less as compared to RA plus RV dash. So it means that the denominator is less as compared to this case. And when the denominator is less as compared to this case, the numerator is same, then we can say that overall there is an increase in the current as compared to the previous case. And now this increase in current is measured by the ammeter. So in this case, we can say that the current is, or the A dash value, let it in this case the current is A dash. So A dash value is large. So it is large as compared to the previous value. So in this way, there is more current in the ammeter as compared to the current in the previous case. Now, what about the voltage across the voltmeter in this case? Now you know that this particular battery is supplying the voltage across this particular resistor, this particular ammeter, as well as this particular voltmeter. So we can say it, this is VA and this is VB, V subscript V, which where VA is the voltage across ammeter, V subscript V is the voltage across the voltmeter. Now in the second case also the battery is same. So if the current is increased in the second case, the voltage drop across the ammeter is also going to increase, because the voltage across the ammeter is given by the current, which in the new case is equal to I dash, and the resistance RA. So VA dash, we can call it as V dash. So VA dash is equal to I dash into RA. In this way, we can say that the voltage is increased. The voltage is increased across the ammeter. And when the voltage across the ammeter is increased, then this voltage across the voltmeter should decrease, because the sum remains constant V. Sum is the total voltage applied. So when the voltage across the ammeter is increased, the voltage across the ammeter is increased, then the voltage across the voltmeter is decreased in this case. So in the second case, the voltage or the reading voltage, or we can say the reading of the voltmeter is down, or it becomes less as compared to the previous case. So in this way, we can say that option A is correct. Option A is correct. In option A, it is said that the value of the current in the ammeter is going to increase, whereas the value of the voltage measured by the voltmeter is decreased. So that's the answer. Option A is correct here. Now I am explaining it in Hindi. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि एक पर्टिकुलर एमीटर और वोल्टमीटर सीरीज में लगे हुए हैं, एक वोल्टेज से एक बैटरी से सप्लाइड है ये, उसके बाद एक वोल्टमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टर को लगा दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एमीटर के अक्रॉस करंट बढ़ेगी और वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी, या क्या एमीटर और वोल्टमीटर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज घटेगी,
क्या एमीटर के अक्रॉस करंट बढ़ेगी, वोल्टमीटर के अक्रॉस घटेगी? ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट ऑप्शन है। और या फिर क्या एमीटर के थ्रू जो करंट पास हो रही है वो घटेगी और जो वोल्टमीटर की वोल्टेज है वो बढ़ेगी। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक-एक करके हम एनालाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि आइडियल जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे एमीटर और वोल्टमीटर, उनके लिए आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए वेरी लो होनी चाहिए एमीटर की रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे केवीएल की हेल्प से करंट निकालते हैं तो करंट निकल के आती है इस केस में टोटल अप्लाइड वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर ए प्लस आर वी। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए आर ए प्लस आर वी। आर वी काफी लार्ज होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज काफी लार्ज होता है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म देख रहे हैं आप, ये काफी लार्ज होगा। और अगर ये टर्म काफी लार्ज होगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन या रेशियो काफी कम हो जाएगा। यानी फर्स्ट केस में करंट जो है वो स्मॉल रहेगी। तो एमीटर जो करंट मेजर कर रहा होगा वो स्मॉल करंट मेजर कर रहा होगा फर्स्ट केस में। दिस द फर्स्ट केस। वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो एक सर्टेन वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। तो एक लार्ज वैल्यू होगी ये, क्योंकि यहाँ पे आरवी की वैल्यू काफी लार्ज है, नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो वोल्टमीटर काफी हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जब वोल्टमीटर के अक्रॉस रेजिस्टर को लगाया जाता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर, अलग से एक रेजिस्टर लगाया जाता है, तब उस कंडीशन में हम जानते हैं जब कभी भी एक हाई वैल्यू के रेजिस्टर के अक्रॉस एक सर्टेन मॉडरेट वैल्यू का रेजिस्टर लगाया जाता है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर पैरेलल कॉम्बिनेशन की घट जाती है। इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसके लिए फॉर्मूला 1/r net इक्वल्स टू 1/rv प्लस 1/r, इससे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं r net इक्वल्स टू r इंटू आर वी अपॉन आर प्लस आर वी। अब यहाँ पे ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस जो है पहले के मुकाबले घट गई है। और अगर नेट रेजिस्टेंस घट गई है तो जब हम करंट निकालेंगे इस पर्टिकुलर केस में, जो कि होगी V यानी टोटल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर ए प्लस आर नेट, आर नेट की वैल्यू पहले के मुकाबले घट चुकी है। आर ए सेम है, आर ए में कोई बदलाव नहीं आया है पिछले और इस केस में। आर नेट की वैल्यू जो है वो एक तरह से डिक्रीज हो चुकी है। तो अगर डिनोमिनेटर में टर्म हमारा डिक्रीज होता है तो ओवरऑल रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। और ओवरऑल रेशियो अगर हमारा बढ़ जाता है इसका मतलब करंट में इंक्रीज होगा। और अगर करंट में इंक्रीज होगा तो जो करंट एमीटर में जा रही है उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, जिससे कि एमीटर की रीडिंग पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। सो हम कहेंगे द रीडिंग ऑफ द एमीटर इंक्रीज। बात करते हैं द वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर। तो इस केस में वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर की अगर हम बात करें तो इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमने जो अभी डिस्कस किया कि अगर हम देखें ध्यान से तो वोल्टेज जो अप्लाई की जा रही है वो दो पार्ट में वोल्टेज अप्लाई कर रही है, दो पार्ट में वोल्टेज दे रही है, एक वोल्टेज एमीटर के अक्रॉस, एक वोल्टेज वोल्टमीटर के अक्रॉस। तो अगर हमारा पहले केस में हम देखें वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज वी है और वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज वी है, तब उस केस में क्या होगा कि अगर अगर हम ध्यान से देखें करंट अगर बढ़ रही है दूसरे केस में, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है एक तरह से वो बढ़ रहा है पिछले केस के मुकाबले। तो हम कह सकते हैं कि मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पहले के मुकाबले बढ़ रही है। तो सम को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हम कह सकते हैं वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज घटनी चाहिए। ये एक मेथड है समझाने का। दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करंट है आई डैश, करंट है हमारी आई डैश जो एमीटर वोल्टमीटर दोनों में जा रही है, और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस जो है जिसे हम आर नेट कह रहे हैं वो पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। तो अगर हम ओम्स लॉ से देखें, वोल्टमीटर के अक्रॉस जो नया वोल्टेज होगा पिछले के मुकाबले आई डैश इंटू आर नेट होगा। आर नेट की वैल्यू घट चुकी है, इसका मतलब वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज घट जाएगी। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एमीटर की करंट में इंक्रीमेंट होगा और वोल्टमीटर की वोल्टेज में डिक्रीमेंट होगा प्रीवियस केस के मुकाबले। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।